Hello friends and dear students, welcome to Maths and Mathscape. In today's video, we'll have one of the questions from the exercise 6.5, and these are the questions from the triangle and its properties and the class 7th. Okay, now let us go through this question here. I have already written this question on the board here. तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कहता है 15 मीटर लॉन्ग लेडर इज रीच्ड अ विंडो ऑफ 12 मीटर हाई। तो यहाँ पर एक लेडर है, सीढ़ी है, तो ये जा रही है कहाँ तक? एक विंडो तक। नाउ दिस लेडर यू नो दैट दिस इन दिस स्लैंटिंग पोजीशन हियर। तो यहाँ तक ये पहुंचते हैं कहाँ? एक यहाँ पर एक छोटा सा विंडो है, तो जो लेडर है यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर है। नाउ दिस लेडर इज अगेंस्ट द वॉल हियर, वॉल के सामने है, so placed on the wall here and the height of the wall is 12 meter here. अब हमें यहाँ पर देखना, you just see this is the foot of the ladder here, this is the foot of ladder and this is the foot of the wall here on the ground. Now from this point to this point the length is a meter. तो यहाँ पर जो length है वो a meter है, यहाँ पर a meter है. So we have to find the डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। तो ये जो यहाँ पर लेडर है जो इसका फुट है, तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल हियर। तो ये हमें यहाँ पर इसमें फाइंड आउट करना है। एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज एंड दिस लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम। एंड यू नो अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम, आपको पहले ही पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ व्हेन यू आर मेकिंग दिस फिगर हियर, तो जो इसकी डायग्राम बनती है, हमारे पास क्या होता है, जो वॉल होता है क्या विच इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, जो क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं सो ऑन द ग्राउंड दे आर यूजुअली परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको ये हमें अज्यूम करना है दिस इज व्हाट, this is a right triangle here and you know that this ground जो हमारे पास एक फ्लैट सरफेस होता है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बनेगा इधर and this is the 90 degree here and this wall is against this ladder is against this wall here, so it means that this is in the slanting position। तो यहाँ पर क्या बनेगा ये, now this becomes the hypotenuse here, तो यहाँ पर बनेगा ये hypotenuse and this wall becomes the perpendicular or the altitude भी हम इसको कह सकते हैं। so this is perpendicular and this ground, जो ground level हमारे पास है ये, तो ये बन सकता है base of this triangle। so this is all about this question here। now it will be very easy for you that how to find the base of this triangle or distance from the foot to the foot of the wall। ये हमें डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी। तो सिंपली वी आर गोइंग टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इनटू दिस ट्रायंगल हियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इधर इन राइट ट्रायंगल। तो हम जरूरी नहीं इस राइट ट्रायंगल का हम एक नाम लेंगे, इन अ राइट ट्रायंगल सो फॉर्म्ड, जो हम हमारे पास ये फॉर्म हुआ सो फॉर्म्ड वी हैव बाय using Pythagoras theorem। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे Pythagoras theorem। so that means you know Pythagoras theorem is what here। तो शॉर्टली मैं लिखूंगा यहाँ पर hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। so this is the formula of the Pythagoras theorem। so hypotenuse you know that, तो जो length of ladder है वो hypotenuse है, तो इसकी जो लेंथ वो 15 सेंटीमीटर है, सो 15 मीटर है, 15 स्क्वायर। तो बेस इज ए, सो ए स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज 12, सो दैट मींस 12 स्क्वायर। सो नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, 15 into 15, सो दैट इज 225 is equal to a square plus and 12 is 144। so after that you can find out here, now 225 minus 144 so is equal to a square। now let us find the difference between these two। तो यहाँ पर ये बनता है कितना, now let us calculate here। तो यहाँ पर is equal to a square। now this 81 can be written as 9 square is equal to a square। so that means in the laws of exponents we have
when the exponents are same तो base are also same. तो एक तो ये ला यहाँ पर बनती है, या simply you can also cut out these two. तो यहाँ पर आप इसको cut out भी कर, square and square will be cancelled, shortcut है हमारे पास. So that means जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो A is equal to 9 meter. So that means the distance between the foot of the ladder to the foot of the wall is 9 meter. So this is the 9 meter here. So this is the exercise. This is the question from the exercise 6.1, 6.5. So I hope you understand this video. Have a nice time. Thank you.